Good morning, students. Today we will discuss about the pharmacovigilance. हम आज फार्माकोविजिलेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि फार्माकोविजिलेंस आपका होता क्या है, WHO को उसमें आपका क्या रोल होता है और आज के टाइम में फार्माकोविजिलेंस हमारा इतना ट्रेंडिंग में क्यों है। फार्माकोन यानी कि ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है मेडिसिनल सब्सटेंसेस एंड विगिलिया इज द लैटिन वर्ड टू कीप वॉच। कि जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं उन पे हमें क्या निगरानी रखने की जरूरत है, उसको हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। WHO definition is the science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect or any other drug related problem. उसको हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। नीड फॉर फार्माकोविजिलेंस, limitations of clinical safety study data। क्लिनिकल स्टडी डाटा की बहुत लिमिटेशंस हैं, हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसमें आपका क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस आते हैं जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपके जैसे नंबर ऑफ पेशेंट कितने होंगे, 100, रेयरली 1000, 100 भी हो सकते हैं और आपके कई बार 1000 भी होते हैं। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके कितने होते हैं, 1000 और 2 मिलियन। क्लिनिकल ट्रायल में आपके कितने होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, बट प्रैक्टिस में आपके 1000 से मिलियन तक होते हैं। ड्यूरेशन आपका कितना होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स का आपका वीक्स होता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस का आपका ईयर्स होता है। ट्रायल्स आप कुछ एक वीक तक कर सकते हो, बट आप प्रैक्टिस क्या ईयर्स तक कर सकते हो। ड्यूरेशन क्या होगा इसमें, वीक और इसमें ईयर। पॉपुलेशन इज द प्रेग्नेंट, चिल्ड्रन, एल्डरली एक्सक्लूडेड। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एल्डरली भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में सब होते हैं। कॉन्क्यूमिटेंट मेडिकेशंस एंड इलनेस, क्या को अगर किसी को मेडिकेशन पे है, कोई अगर कोई बीमार है उसको हम अवॉइड करेंगे या, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूजुअली ये लोग प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारे ड्रग्स हमें पता होता है, ऑलरेडी वैलिडेटेड होती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डोज। डोज हमारी ये फिक्स होती है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारी वेरिएबल कॉम्प्लियंस होती है कि जितना पेशेंट को नीड है। नेक्स्ट आपका आता है कंडीशन। कंडीशन में आपका है रिगरस, मोर इंफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबल, लेस इंफॉर्मेशन। फ्लेक्सिबल है, लेस इंफॉर्मेशन, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन काफी होती है। withdrawals from the market as a result of spontaneous reporting। अब किसी ड्रग को मार्केट से क्यों उठाया जाता है, क्यों उठाया जाता है, इन इसमें आपके प्रोटोकॉल होंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, रीजंस फॉर विड्रॉल होगा, ईयर ऑफ अप्रूवल और ईयर ऑफ विड्रॉल होगा, उसका पूरा डाटा रखा जाएगा। जैसे कि प्रेक्टोलोल है, प्रेक्टोलोल क्या करता था, प्रेक्टोलोल ये हमारे बीटा ब्लॉकर ड्रग है। ये हमारी क्या करती थी, ब्लाइंडनेस कर देती थी, अंधा कर देती थी पेशेंट को। ये आपकी 1907 में इसको 70 में अप्रूवल मिला था, 1975 में इसको विड्रॉ कर लिया गया था। नेक्स्ट आपकी है बिनोक्साप्रोपिन। बिनोक्साप्रोपिन आपकी क्या करती है, ऑन साइक्लोसिस, रीनल, लीवर, बोन मैरो टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी करेंगे। 1982 में इसका अप्रूवल हुआ था और 1982 में ये विड्रॉ कर ली गई थी। नेक्स्ट आपकी है इनकाइनाइड। इनकाइनाइड आपकी एक्सेसिव मोर्टेलिटी कराती है और ये आपकी 1987 में अप्रूव हुई थी और 1991 में बैन हो गई थी, विड्रॉ कर लिया था इसको। नेक्स्ट आपकी है टीम फ्लक्सासिन। इसमें आपकी हीमोलाइटिक एनीमिया शो, रीजन है हीमोलाइटिक एनीमिया दिखाती है। ये 1992 में आपकी अप्रूव हुई थी और 1992 में ही विड्रॉल कर लिया गया था। नेक्स्ट आपकी है टरफेंडिन। ये आपकी फेटल कार्डियक एरिथमियास कराती है फिटस के अंदर। 1985 में आपकी क्या हुआ था, अप्रूवल हुआ था। 1998 में आपका बैन हो गई थी। नेक्स्ट आपकी है बोन नेक। ये आपकी सीरियस हिमेटोटॉक्सिक इफेक्ट कराती है और ये आपकी 1997 में अप्रूव हुई थी और 1998 में क्या हो गई थी, बैन हो गई थी।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थैलिडोमाइड के भी हमारे क्या आते थे, बहुत ही ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स आए थे। In 1960 marketed in 46 countries, hypnotic prevention of nausea and pregnancy heavily promoted, बहुत ज्यादा प्रमोट हुई थी थैलिडोमाइड, बट 1960 फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ डिफॉर्म्ड infant फोइकोमेलिया, टोटल मोर देन 20,000 केस आए थे फोइकोमेलिया के इन्फेंट्स के अंदर। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ थैलिडोमाइड इंसिडेंट, यूएसए के अंदर 1962 के अंदर अमेंडमेंट ऑफ फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिक्वायर्ड बोथ सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा। यूके in 1964 येलो कार्ड स्कीम, डब्ल्यूएचओ in 1968 प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग। एम्स ने क्या किया था, टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी इन रिलेशन टू द यूज ऑफ मेडिसिन्स एंड ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल इंटरवेंशंस कराई थी टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिलेशन टू यूज ऑफ मेडिकेशंस, to contribute to the assessment of benefit, harm, effectiveness, and risk of medications, encouraging their safe, rational, and more effective use, to promote understanding, education, and clinical training in pharmacovigilance and its effective communications to health professionals and in public. Terminology is adverse drug reaction (ADR) and unintended reaction to a drug taken at doses normally used in man. When an association between an AE and a drug is established in between an ADR. Adverse event AE is a negative experience and faced encountered by an individual during the course of the clinical trial, which may or may not be associated with a drug. Serious adverse event SAE is any adverse event which is fatal, life-threatening, permanently disabling, or which results in hospitalization. Pharmacovigilance process. Detecting and reporting an ADR. ADR form is filled out with the patient and reaction details. This later forms basics on the data entry and spontaneous reporting mandatory for the reporting. These data ADRs are filled by the patients. क्या होता था कि पेशेंट में हम ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन डाटा फिल करते हैं, उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि इस ड्रग का आपका कितना साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कितने एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में हमारी कितनी मेडिसिन गई है। अगर मार्केट में उसके साइड इफेक्ट्स आपको ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा उसका डाटा मॉनिटरिंग कराई जाती है, ज्यादा डाटा उसके एडवर्स इफेक्ट दिखा रहे हैं, तब उसको विड्रॉ कर लिया जाता है मार्केट से। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस। Most common form of ADR reporting is the healthcare professional identify the report and suspected drug reactions of their national pharmacovigilance centers or to the manufacturers. Mandatory reporting is the manufacturers are required to submit reports to they receive from healthcare providers to the national authority in the form of PSUR, periodic safety update report, a regulatory document prepared by the marketing authorization holder submitted to the agency, and the worldwide post authorization safety experience includes information on all ADRs collected irrespective of the reporting country and includes scientific evaluation of this benefit balance, data collection and capture, data storage and maintenance, data selections, retrieval and manipulation. इसके बाद आता है सिग्नल डिटेक्शन। सिग्नल की डिटेक्शन कैसे करते हैं? सिग्नल्स आपके क्या होंगे? न्यू, प्रीवियसली अननोन सेफ्टी इंफॉर्मेशन, WHO definitions, reported information on a possible causal association between the adverse event and a drug, the relationship being unclear and incompletely documented previously. Regulatory actions on the basis of ADR reports. Summary of product characteristics. SPC is the basics of information for healthcare professionals on how to use the medicinal product safely and effectively. The
patient information leaflet PIL drawn up in accordance with the SPC. Chances in classification from over-the-counter to prescriptions only medicine from renewable prescriptions is non-renewable special medical prescription restricted present prescription. Marketing authorization withdrawal is a batch recall based on clustering of ADR. WHO and UMC is the Upasla Monitoring Center. UMC is a field name of WHO Collaborating Center for International Drug Monitoring. It is responsible for the management of the WHO program for international drug monitoring. Functions of WHO program for international drug monitoring include identification and analysis of new drug reactions, signal from the case report information submitted to the national center and form them to the database. Information exchange between WHO and national centers mainly through DigiMed and the email information exchange system. क्या होता था इसमें कि आपकी जो इंफॉर्मेशन जो डाटा कलेक्ट किया जाता है WHO से वो आपके नेशनल सेंटर तक जाता था, उसके बाद आपके ईमेल इंफॉर्मेशन तक जाएगा, उसके बाद आपका पब्लिकेशंस ऑफ पेरिडियल न्यूज सेंटर्स गाइडलाइंस एंड बुक्स ऑफ द फार्माकोविजिलेंस एंड द रिस्क मैनेजमेंट एरिया. Supply of tools for management of clinical information including adverse drug reaction case reports are the WHO drug directory, WHO adverse reaction terminology, and the provisions of training and consultancy support to national center and the countries establishing pharmacovigilance center. Computer software for case report management designed up to and needs of national center vigilance. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर केस में हम क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, नेशनल सेंटर्स बनाएंगे जिनको हम वीजी फ्लो करते हैं. एनुअल मीटिंग्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव of national center at which scientific and organizational matters are discussed and the methodological research for the development of pharmacovigilance as a science. Functions of UMC to coordinate the WHO program for international drug monitoring and its more than 8 member countries. To collect, assess, and communicate information from member countries about the benefits, harms, and risks of drugs and other substances used in medicines to improve patient therapy and public health worldwide. To collaborate with collaborate with member countries in the development and practice of the science and the pharmacovigilance. Pharmacovigilance in India. Central Drug Standard Control Association DGHSN, Ministry of Health and Family Welfare is the legislative requirements of PV in India. Schedule Y of the Drug and Cosmetic Act 1945. Timeline of reporting and ADR is the by sponsor of licensing authority is 14 calendar days and investigation to sponsors within 24 hours. Investigation to ethnic committee within 7 working hours. Pharmacovigilance in यूपी के अंदर आपको pharmacovigilance कैसा होगा? येलो कार्ड स्कीम, ADROIT adverse drug reaction online information tracking system. Hydra Vigilance is the data processing network and management for the reporting and evaluating suspected adverse reaction during the development and following market authorization of medical product is EDA. फार्माकोविजिलेंस यूएसए के अंदर आपकी मेडवॉच देखती है और मेडवॉच 3500 फ्रॉम FDA फ्रॉम 3500. फार्माकोविजिलेंस ये प्रोग्राम इन इंडिया जिसको हम PVPI कहते हैं, इसमें आपकी स्टीयरिंग कमेटी होती है, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें सिग्नल रिव्यू पैनल होगा, कोड रेटिंग पैनल होगा, क्वालिटी रिव्यू पैनल होगा. ठीक है, इसमें आपके नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स होंगे जिसमें आपका इंडियन फार्माकोविजिलेंस कमीशन गाजियाबाद में है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया हेडक्वार्टर सेंटर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, इसमें आपके CDSCO जोनल एंड सब जोनल सेंटर्स भी होते हैं.
नेक्स्ट आपका आता है इसके गोल्स टू एंश्योर दैट द बेनिफिट्स टू यूज ऑफ मेडिसिन with weights the risk of the safeguard the health and Indian population. Next is क्या आता है objective to monitor adverse drug reactions in India population to create awareness amongst healthcare professionals about the importance of ADR reporting in India to monitor benefit risk profile of medicines, generate independent evidence based recommendations of the on the safety of medicines and support the CDSCO for formulating safety-related regulatory discussions for medicines and the communicate finding with all key stakeholders and create a national center of excellence at work with global drug safety monitoring standard. 5 years roadmap of the pharmacovigilance program of India is the initial phase 2010 to 11, expansion of considerations of 11 to 12, expansion and maintenance phase 12 to 13, expansion and optimization 13 to 14 and excellence phase 14 to 15. ठीक है, ये आपके टारगेट्स होंगे फार्माकोविजिलेंस. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर. आज हमने फार्माकोविजिलेंस के बारे में क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे ये काम करता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर